Just a second, ma'am. Yeah. Class link has been forwarded in the group for feedback. उसे fill कर देना आज ही. Okay? अच्छे से साइंस में forward किया है. Ma'am, am I audible properly? Because Yes. I'm unable to hear you all. थोड़ा light volume ही आ रहा है एकदम. अच्छा नहीं ma'am, you are audible. I'm audible, right? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so आज fill कर देना वो form को. Everyone. Yes ma'am, you can start. Okay, students, good evening. So, as we have seen all the balancing methods, okay, कौन से balancing methods हमने देखे हैं? Can anyone tell me? There are two balancing methods we have seen. कौन से देखे थे? Oxidation method, ion electron. Oxidation method and ion electron method. Okay. So now we are seeing redox reaction and electrode potential, how it is playing an important role in an electrode reaction. That is what we are going to see. Okay. Now in 12th standard you will be learning a separate chapter on electrochemistry. Okay, वहाँ पे बहुत सारे cells you will be learning different types of cells, how different electrode reactions are taking place. Everything you will learn there. Here only a small part just to learn reduction potential. This is important. Okay, now as I said, whenever we are learning a redox reaction, okay, reaction ऐसा होना चाहिए जिसमें oxidation भी होना चाहिए, reduction भी होना चाहिए. Okay, so the reaction in which simultaneous oxidation and reduction हो, then there will be redox. Okay, दूसरा ये चीज हमने हर एक बैलेंसिंग रिएक्शन में देखा था कि जो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, both of them has to be same. Okay, so जो रिएक्शन दिया गया है, according to that reaction, if the electrons are not same, हम क्या करते हैं, we multiply it with a suitable coefficient. Okay, so when we multiply it with a suitable coefficient, क्यों करते हैं हम, so that oxidation का electron and reduction का electron same हो जाए, and while writing overall reaction we cancel. Okay, so for that reason we are doing that. Okay, now we will see in a short experiment. Okay, I have considered two cells. Okay, दो cell मैंने लिया है. Okay, now this is electrolysis process which you will be aware of it. Okay, एक beaker ऐसा है जिसमें I have filled with zinc sulfate solution, and another one is in that way which I have filled with copper sulfate solution. Okay, अब मैंने ये solution को electrolysis में we call it as electrolyte. Okay, now if we have taken an electrolyte of zinc sulfate or copper sulfate, then definitely जो मैं electrode ले रही हूँ वो उस solution से कहीं ना कहीं related रहेगा. Okay, because मैं यहाँ पे एक electrode लेके दूसरा solution नहीं ले सकते, then in that case reaction will not take place. Okay, so if it is zinc sulfate, अब इधर देख सकते हो, I have taken zinc electrode. Okay, so because of the zinc electrode only I have taken zinc sulfate. Okay, and दूसरा है copper electrode. Okay, and for that I have taken copper sulfate solution. Okay, दोनों beaker को connect किया है एक inverted U-shaped tube. Okay, this is an inverted U-shaped tube. Okay, which is called as salt bridge. Okay, this inverted U-shaped tube is known as salt bridge. इसका काम क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे ion transfer में useful है. Okay, it is helpful to transfer the ion from one container to another container. Okay, now this inverted U-shaped tube is known as salt bridge. This is made up of what? इसके अंदर we will be having KCl, या फिर it will be filled with either KCl or ammonium nitrate solution, और उसको कवर अप करने के लिए it will be मतलब उसको surface area it will be surrounded by agar agar gel. Okay, तो उसको अंदर ही रखना है. तो इसका एडवांटेज क्या है, जब हम इसके अंदर ये फिल करते हैं तो इसको अगर अगर जल से कोट किया जाता है ताकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स ना हो. Okay, only it is used to transfer ions from here to here, but it will not, जो इसके अंदर का कंटेंट है वो आयंस के साथ मिक्स नहीं करेगा. ओके,
Now this one, zinc is my anode, copper is my cathode. Both are connected by an electrical wire. Okay. In between current supply के लिए we have kept an voltmeter. So the apparatus circuit is divided into two parts. एक है by electrical wire which is used for the flow of electron, and another one is salt bridge which is used for the flow of ions. Okay. Now electrons flow from anode to cathode. Okay. तो ऐसे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा. इट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ओके. तो यहाँ से आयंस कलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे आके इट विल डिपॉजिट. ओके. दिस इज द सेटअप. ओके. नाउ एनोड. एनोड इज मेंट फॉर व्हाट? एनोड इज मेंट फॉर जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. एनोड इज मेंट फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड इज मेंट फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इससे हमें ये समझ में आ गया है एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन. ओके. सो ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड. Understood the experimental setup? Yes, students? Yes, ma'am. Yes. So now ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ओके. नाउ इलेक्ट्रॉन विदाउट पोटेंशियल तो मूव नहीं होगा. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके. तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो करंट सप्लाई हम दे रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड potential, and this electrode potential yani the value of this electrode potential depends on these factors. It depends on nature of metal ion. kaisa metal le rahe ho us pe depend karta hai. concentration of ions. okay. metal le rahe ho वो एक है. then concentration of ions. electrolyte में अपना ions का concentration कितना है? okay. ये just an assumption. I will say this is 1 molar ZnSO4 and this is 1 molar CuSO4. Okay. So concentration of ions, and third one temperature of the setup. Okay. Temperature of ions बोलेंगे हम. So the magnitude and direction of this one depends on the nature of metal ions, concentration of ions and temperature. Okay. Now for assumption, if concentration is taken as unity yani 1. Okay. Then 1 molar, 1 normal solution, whatever it is, 1 molar solution. Temperature will be 298 Kelvin, room temperature. Okay. Then जो potential हमें मिलता है, okay, वो conditions पे जो potential हमें मिलता है, that is known as E naught. E naught is what? Standard reduction potential. Okay, so values हमेशा reduction का लेते हैं, so it is standard reduction potential. Okay, so E naught maybe you will be observing two types of value. One is positive E naught value and other one is negative E naught value. Okay, so जिसका भी positive E naught value आ जाता है, they will act as a stronger oxidizing agent. Okay, जिसका value positive में आता है, they will act as a stronger oxidizing agent. And whichever is having a negative value, they will act as a stronger reducing agent. Okay. जितना ज्यादा negative का magnitude है, okay, magnitude negative का जितना ज्यादा बढ़ता है, तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा reducing agent है. जैसे अपना alkali metals and alkaline earth metals generally have a larger reduction potential, so they are good reducing agent. Okay. So negative value यानी वो रिडक्शन है, they are good reducing agent, and if you have positive value then they are good oxidizing agent. Okay. So इसमें से आपको क्या याद रखना है? Whenever you are considering an electrode setup, you should remember oxidation will take place at anode, यानी loss of electron will always take place at anode, gain of electron will take place at cathode. Okay. Now again there are two types of cell. Okay, Daniel cell होता है, okay, and दूसरा galvanic cell होता है. तो ये दोनों cells में भी there is difference. यहाँ पे जैसे हम इधर बोलते हैं, एक में oxidation at anode, reduction at cathode. दूसरे चीज में galvanic में it will be different. So that why it is different that you will learn in the next year. So as of now, you just remember these things.
oxidation takes place at anode, yani loss of electron take place at anode, okay, gain of electron take place at cathode. The potential required in an electrolysis experiment is known as electrode potential, and at unity, if concentration is unity, and at 298 Kelvin, whatever potential you get is known as standard reduction potential. Okay, so more the E naught value, more negative the E naught value, more stronger reducing agent, and more positive the E naught value, more good oxidizing agent. Okay, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है. Okay, so don't need to write anything. Experiment is given in the textbook. You can just take screenshot of this. Then we'll start solving the questions. Just take the screenshot. हो गया? टेक्स्ट बुक देखो, पेज नंबर 90. There's a table given. Can you see that? ऐसा एक टेबल है, देखो. ओके, लेफ्ट साइड अपने इलेक्ट्रोड्स हैं एंड राइट साइड उसके ई नॉट वैल्यूज है. ओके, तो इसमें भी यू कैन ऑब्जर्व, जैसे नीचे नीचे देखो, वी हैव अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, तो वो केस में देखो अपना नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नेगेटिव इज मोर. ओके, सो वो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा अपना ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, ठीक है, ये चीज आपने नोट डाउन किया ना. नाउ कम टू आवर टेक्सचुअल क्वेश्चन. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92 में ई देखना. क्वेश्चन नंबर 3 में ई. What is oxidation? Which one of the following pairs of species is in its oxidized state? First one, बताओ. Oxidized state में है, reduced state पे है. Mg is getting converted to Mg2 plus. It is in oxidized state or reduced state? Oxidize. Okay, so the first one is oxidized state. Second one, Cu is converted to Cu2 plus. Oxidation. Oxidize. O2 to O2 minus. Reduced. Reduce. And Cl2 to Cl minus. Reduce. Okay, then okay, question number I देखना. Which of the following redox couple is a stronger oxidizing agent? Okay, which of the following redox couple is a stronger oxidizing agent? V naught value से आपको देखना है. Cl2 में 1.6 है and Br2 is 1.09. So which one? You have to see according to the magnitude. Magnitude wise मैंने क्या बोला था? More positive. Okay, more positive, good oxidizing agent. More negative, good reducing agent. Cl2. Cl2 is a good oxidizing agent. Yes. Then second pair, MnO4 minus and Cr2O72 minus. MnO4 minus. Understood? Such kind 1 mark questions में आएंगे ऐसे वाले. Okay, MCQs या फिर 1 mark question. Which of the next question, J. Which of the following redox couple is a stronger reducing agent? Li की Mg. Li. Yes. And second pair, Zn or Fe? Fe. Zn. मैग्नीट्यूड वाइज देखना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज में हम क्या बोलते हैं, -1 यानी हाईएस्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन किया था मैग्नीट्यूड. ओके, सो अंडरस्टूड दिस वन. ओके, सो रिडॉक्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यू विल गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, shall I remove this? Everybody has taken the screenshot now? Yes. Did we do stock notation?
No. Okay. Stock notation. इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना. Complete the following table. Assign oxidation number to the underlying species and write stock notation of the compound. Now first one, AuCl3. Oxidation number Au का पूछा है. What is the oxidation state? Au का बोलो. Which metal is Au? +3. +3. Yes. Which metal is Au? Gold. Gold. Okay. Now stock notation हम कैसे लिखते हैं? It is very simple. बस हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को रोमन न्यूमेरल्स में डालना है. तो इसका स्टॉक नोटेशन अगर मैं लिखूं तो इट विल बी लाइक दिस. अंडरस्टूड? वी नीड टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन न्यूमेरल्स. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन रोमन न्यूमेरल्स. जैसे सेकेंड वन है SnCl2. SnCl2. Which metal is Sn? कौन सा मेटल है Sn? बोलो. नो वन. Sn कौन सा मेटल है? Tin. Tin. Yes, very good. Sn is tin. चलो बताओ, what is oxidation state in this case? Come on, बच्चों, why is it taking so long? X plus 2 into -1, right? Halogen का general is -1, which is 0. So X is how much? +2. +2. +2. तो यहाँ पे +2. So stock notation हम कैसे लिखेंगे? How to write the stock notation? Sn Roman numeral, 2 in Roman numeral, then Cl2. Understood? Yes, ma'am. Okay, चलो क्विकली बाकी भी कर लो. नेक्स्ट वन में मेरे को जस्ट बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. अंडरलाइन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. What is the oxidation state of V? +5. +5. Yes. So how you will write? V, then Roman numeral, then O7, 4 minus. Then platinum Cl6, 2 minus. What about this? +4. 4. Yes. Platinum 4, Cl6, 2 minus. Okay. And last, H3 is O3. +3. 3 है. Yes. And 6. Yes. H3 is 3. Understood this type of question? Done? Yes, बच्चों हो गया ये completed? Yes, ma'am. Okay. Now next question लिखना. Divide the following redox reaction
divide the following redox reaction into oxidation half equation, and reduction half equation. Oxidation half equation and reduction half equation. First one. Okay. So first thing, we will assign the oxidation state. So, bata, what is the oxidation state here? Phosphorus. Here. Bolo? 0. 0. Yes. And in this case, phosphorus. क्या आएगा? X minus +5. is 3. So it is +5. Yes, very good. Now in this case, so oxygen is -2. यहाँ पे +1 oxygen -2. What about phosphorus? One plus x minus 6 is -2. 3. X is equal to +3. So from here to here, क्या है? Oxidation. बराबर ना? Yes, ma'am. +3. And if I consider here to here, reduction. तो आपको separately लिखना है as oxidation half reaction and reduction half reaction. So you'll write it like this. Oxidation half reaction. Under that, phosphorus 2 HPO3 2 minus. Ma'am, here we don't have to balance P. No need. This is only question is like you have to separate them as oxidation half reaction and reduction. Okay, तो हमें यहाँ पे balance करने की जरूरत नहीं है, just आपको separate करके लिखना है, that's it. Okay, it will be 1 mark question. So here +3. Similarly, you will be writing reduction half reaction. So it is PO4 3 minus to HPO3 2 minus. Understood? How to write these kind of questions? Samjha? Yes, ma'am. Okay, copy down this.
Try solving these questions. Classify them as oxidation and reduction half reaction. अथर्व माली बार बार तेरा कॉल आ रहा है जो तू अपना वीडियो ऑफ कर रहा है अथर्व Done with the second one. Second one हो गया? No. Okay. So tell me what is the oxidation state here? N. Bolo. Second reaction. +3. +3, yes. And here N. +5. +5. Here +2. +2 +2. Okay. So H on NO2 to NO3 minus, it is oxidation, and HNO2 to NO is reduction. What do we call this reaction as? इसका एक specific name है. कल हमने देखा था. This one. Disproportionation. Very good. Okay, so this is disproportionation where same element, okay, and the reactant में जो element है वही product side में oxidize होके एक product दे रहा है, reduce होके एक product दे रहा है. That is disproportionation. Okay, do the third one also.
Ma'am, हाँ बोलो. ma'am, how to find oxidation number for RE? RE is an actual state ना बच्चा, it will be 0. यहाँ पे 0, यहाँ पे आपको फाइंड करना है using oxidation number of oxygen. And ma'am, I? कौन सा यहाँ पे? नहीं, right side. मोनोएटॉमिक है ना, चार्ज है ना उसके ऊपर, इट इज अ मोनोएटॉमिक आयन, सो इट विल बी -1. उसके ऊपर जो चार्ज है सेम इटसेल्फ. रूल नंबर 2 ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so in this case, what is the oxidation state of iodine? +5. Here RE, Plus 5. the 0. okay. In this case, Plus +7. 7. and here -1. 1. So oxidation किसका हो रहा है? RE. Okay, and reduction I का हो रहा है. Okay, so oxidation half reaction में you'll write this. RE to ReO4 minus is oxidation, and reduction में iO3 minus to I minus is reduction. Understood? Next question लिखना. Arrange the following in order of increasing oxidation number of carbon atom. So you will have to find oxidation number of each species here. Okay, मतलब each species in the sense carbon का, सब में आपको carbon का find करना है, and then you will arrange them in increasing order. Understood? Individually सब में find करो हर एक compound में. जैसे for example first one में what will be the oxidation state of carbon? -1. कितना रहेगा? Calcium group 2 element है. +2. +2. Calcium will be +2. So +2 plus 2x is equal to 0. 2x is equal to -2. Therefore, x is equal to -1. In this case, carbon is -1. बराबर ना? Yes or no? Yes. Similarly, find सबका find करो.
हो गया. सेकेंड वन में कार्बन का क्या है? 3. 3. +3. Yes, ma'am. Yes. Third, -4. Minus 4. 4. -4. Then here, +4. +4. +4. Okay. Here, Minus 2. -2. So arrange them. सबसे बड़ा तो ये है, right? CO3 2 minus. Then C2O4 2 minus. yes, C2O4 2 minus. इसके बाद CaC2. yes, it is CaC2. Then C2H4. C2H4. And then CH4. CH4. Okay, so this will be the sequence. Okay. Now next type of questions. Question लिखना. Classify giving reasons. Classify giving reasons. The following unbalanced half reaction. Following unbalanced half equation as oxidation and reduction. As oxidation and reduction. Use oxidation number concept. Ma'am, could you repeat the question? Classify giving reasons the following unbalanced half equation as oxidation and reduction. Okay. Use oxidation number concept. Use oxidation number concept. Okay. So very easy है, just हमें oxidation number find करना है. जैसे इसमें तो मोनोएटॉमिक है तो डायरेक्टली दिस इज +3 एंड हियर +2. तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? Decrease. So since there is decrease in oxidation number, given reaction is reduction or oxidation? Reduction. Reduction. Given reaction is reduction. Undergoing reduction या फिर given reaction is undergoing reduction. वैसे understood? तो ऐसे भी 1 mark के questions है. So just take down. You need to just find the oxidation number and you will have to classify whether it is oxidation or reduction. Okay. Solve the remaining questions.
Sabari? Done writing? Stop talking. Okay, so what about the second reaction? Oxidation or reduction? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. NH3 में n का क्या है? -3. Yes, n is -3 here. +2. +2. So oxidation or reduction? Oxidation. This is oxidation. Then here Cl +5. +5. And here Cl. +4. Oxidation, reduction. Reduction. Okay, now here Br. -1. Yes, -1. And in this case, 0. 0. Oxidation or reduction? Oxidation. Oxidation. Understood? Yes, ma'am. Yes. Now next type of question is okay, question is like what is what is the sum of oxidation state of all atoms, sum of oxidation state of all atoms in ClO4 minus ion. What is the sum of oxidation state of all atoms in ClO4 minus ion? बताओ आंसर क्या रहेगा? -1. Yes, it is. -1. Yes, -1. Okay, so question ध्यान से पढ़ना है. So it is आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. डायरेक्टली आयन के ऊपर जो चार्ज है वो लिखना है. Okay. Then next. So lastly we'll do one question in balancing part. Okay. So which one you will prefer? Oxidation number method or ion electron method? Oxidation. Oxidation number. Oxidation number. इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं आया किसी को? और डबल करना पड़ता है. अच्छा, ओके, फाइन. चलो क्वेश्चन लिखना. बैलेंस द रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सो आयन इलेक्ट्रॉन का मैं होमवर्क में डाल दूंगी. ठीक है, Yes. क्वेश्चन लिखो. बेसिक मीडियम करना है. Just check whether you have done this question. किया है ये? No, ma'am. नहीं किया ना? ओके, स्टार्ट सॉल्विंग क्विकली.
Tanmay Nigam. Tanmay, where are you roaming in the room? Students, there is a correction in the question. This is 4. अगर 6 लिया तो शायद आपको Zn plus 4 आएगा ना? हाँ. Plus 4 आ रहा है ना, तो it shouldn't be 4. So this is the correction here. Okay, net increase by how many electron? Net increase. बोलो, net increase. 2 by electrons. बच्चों, am I audible? Yes, ma'am. Net increase by how many electron? 2 electrons. 2 electrons. So oxidation zinc का हो रहा है ना, and net decrease
8 electrons. 8 आ रहा है, इधर क्या है +5 and here -3. ओके बराबर 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेक देम इक्वल. To make them equal, what you will do? Multiply oxidation by 4. Yes, multiply oxidation by 4. Okay, so Zn OH 4 2 minus. तो पहले यहाँ पे आपने 4 डाल दिया. Then when you add H2O, here you have कितने ऑक्सीजन है राइट साइड? How many oxygen? 16. 16. तो हम 16 H2O इधर अगर ऐड करेंगे तो कितना H इधर ऐड करना है? Okay, we are doing oxidation number method ना, so we will do them together. ठीक है, so 4Zn plus NO3 minus gives NH3 plus 4 ZnOH4 2 minus. Okay, now balancing hydrogen oxygen first. यहाँ पे we have 16 oxygen and here I have 3. So left side I will add 13 H2O, right? बराबर ना? 13 ना? Yes. Okay. Now balancing hydrogen atom. हाइड्रोजन देखो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 13 into 2 26 हाइड्रोजन we have. राइट साइड here 3 plus ये 4 and 4 16. So here total 19 हाइड्रोजन. तो कितना बचेगा? राइट साइड लेस है ना? How many? 7. 7. Okay, so here 7 H plus. Okay, now what will be the next step? Add OH minus equal to H plus on both sides. Yes, add OH equal to H plus on both sides. तो यहाँ पे I will add 7 OH and here also I will add 7 OH. Okay, तो ये 13 H2O में से 7 H2O चला जाएगा इधर. Okay, cancel हो जाएगा. So what is left now? Here, how much is left? बोलो. 13 minus 7. 6. 6. H2O is left. So this will be our final equation. Are you all getting this? मिल रहा है? मैम बोलो. वहाँ पे वो 13 H2O कैसे ऐड किया? 13 H2O. हाँ, राइट साइड अपना कितना था? ऑक्सीजन देखना. Here we have how many oxygens here? Total ये 4 into 4 16 ऑक्सीजन हुआ ना, बराबर. और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी है. जितना कम है उसको 16 करने के लिए जितना कम है उतना ऐड करना है ना. तो 16 minus 3 मैंने यहाँ पे 13 ऐड किया. समझा? यस मैम. Others, are you all getting this? Yes, students, respond. मिल रहा है नहीं मिल रहा है? No answer means what should I understand? You're getting or not? Yes, ki no. Getting, ma'am. So we are done with this chapter. I hope this chapter is clear to all. Yes. Yes, ma'am. Anyways, chalo then. Bye for today. We'll see in the next class. Okay? Bye, ma'am. Yeah. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.